इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन स्पेडेक्स इत्यभियानान्तर्गतं द्वयोः उपग्रहयोः पृथक्करण प्रक्रिया निर्विघ्नतया सम्पादिता। केन्द्रीयायुष मन्त्री प्रतापराव जाधवः अद्य नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य योगमहोत्सवस्य उद्घाटनं विहितवान्। देशस्य विविधस्थलेषु श्वः वर्णानामुत्सवः होलिकापर्व इत्यतीव हर्षोल्लासेन आचरिष्यते। ऋतुविभागेन पूर्वानुमानितं यत् अद्य असम मेघालय अरुणाचल प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति। अपि च विमेन्स प्रीमियर लीग क्रीडायाम् अद्य सायंकाले मुम्बई नगरस्य ब्रेबोर्न क्रीडाङ्गणे मुम्बई इंडियन्स दलं गुजरात जॉयंट्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन स्पेडेक्स इत्यभियानान्तर्गतं द्वयोः उपग्रहयोः पृथक्करण प्रक्रिया निर्विघ्नतया सम्पादिता। अनेनैव भारतेन अन्तरिक्षान्वेषण यात्रायां कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपः समासादितः। अवसरेऽस्मिन् केन्द्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः अस्याभियानस्य सफल प्रदर्शनार्थं सर्वानपि शुभकामनाभिः अभ्यनन्दत्। सामाजिकान्तर्जालिक माध्यमेन मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतीयान्तरिक्षस्थानकमिदं चन्द्रयान चतुर्थं समेत्य भाव्यभियानानां सफल संचालनार्थं मार्गं प्रशस्तीकरिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष यात्रा में अनडॉकिंग का बड़ी अहमियत बताई गई है। दोनों उपग्रह जब अंतरिक्ष में थे, उनको इसरो द्वारा देश में ही अनुसंधान द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी की मदद से अलग करना एक अहम योजना है, जिससे आगे काफी मदद मिलेगी। स्वयं चालित यानी ऑटोनमस डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक की मदद से इसरो अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स को किसी अलग यान से जोड़ पाएगा और अलग भी कर पाएगा। चंद्र ग्रह को उपग्रह भेजकर वहां से सैंपल लेकर वापस आना हो या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में उतरना हो तो डॉकिंग और अनडॉकिंग की आवश्यकता पड़ेगी। यूएसए, रशिया और चाइना के बाद अब भारत के पास भी ये तकनीक उपलब्ध है। सुधीन्द्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। जून मासस्य 21 दिनाङ्के समायोजिष्यमाणाय अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसाय इदानीं केवलं 100 दिवसाः एव अवशिष्टाः। अस्य सज्जतायै केन्द्रीयायुष मन्त्री प्रतापराव जाधवः अद्य नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य योगमहोत्सवस्य उद्घाटनं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे असौ उक्तवान् यत् आगामि 100 दिवसावधौ देशस्य विभिन्न भागेषु 10 महत्वपूर्ण कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ते। 10 कार्यक्रमाणां माध्यमेन विभिन्न स्थलेषु योगस्य कार्यक्रमं भविष्यति। तत्रत्याः जनाः तस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलिताः भविष्यन्ति। योगः एकदिवसाय न अपितु प्रतिदिनाय भवेत्। श्रीजाधवेन उक्तं यत् एतेषां कार्यक्रमाणाम् अन्तर्गतं 10 सहभागी देशैः सह योगादान प्रदान कार्यक्रमस्य योगसंगम इत्येतस्य आयोजनं भविष्यति। असौ संसूचितवान् अयं योगसंगम कार्यक्रमः देशस्य 10,000 स्थलेषु आयोजयिष्यते। 10 इवेंट के माध्यम से अलग अलग जगह पे योगा के कार्यक्रम होंगे। वहाँ के लोगों को वहाँ पर उसमें सम्मिलित किया जाएगा। योगा एक दिन करने से काम नहीं होगा कि सिर्फ 21 जून को होगा कि हर दिन लोगों ने योगा करना चाहिए। इसके लिए भी हम सभी छोटे गांव के पंचायत हो, नगर पालिका हो या महानगर पालिका में भी जो खुले मैदान होते हैं वो योगा के लिए आरक्षित। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशेऽपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य स्वलोकसभा क्षेत्रे गुजरातस्य गान्धीनगरे 47,000 कोटि रूप्यकाणां विभिन्न विकास परियोजनानां दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन उद्घाटनं शिलान्यासं च अकरोत्। एतासु परियोजनासु रेलमार्ग स्वास्थ्य सेवाः सम्मिलिताः सन्ति।
गुजरात राज्यस्य परिवर्तनशील विकासस्य उल्लेखं कुर्वन् श्री शाहः अवदत् यत् राज्ये परिवहनोर्जा क्षेत्रयोः महती प्रगतिः जाता। असौ साणन्दनगरे 500 चिकित्सकीय शय्यायुक्तस्य चिकित्सालयस्य, गान्धीनगरे नूतनस्य नागरिक चिकित्सालयस्य च स्थापनायाः घोषणाम् अकरोत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः, सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः च अस्य वर्षस्य वेव्स इति विश्व श्रव्य दृश्य मनोरञ्जन शिखर सम्मेलनात् प्राक् अद्य नवदिल्ल्यां वैश्विक समुदायेन सह सम्पर्कं करिष्यतः। अस्य आयोजनस्य माध्यमेन प्रशासनस्य उद्देश्यः शीघ्रतया वर्धमानेभ्यः प्रसारमाध्यमेभ्यः मनोरञ्जनक्षेत्रेभ्यः च एकीकृत वैश्विक मञ्चरूपेण वेव्स इत्येतस्य परिवर्तनकारी क्षमतायाः समेधनम् इत्यस्ति। कार्यक्रमावधौ शताधिक राजदूताः, उच्चायुक्ताः च प्रसारमाध्यमेषु मनोरञ्जनक्षेत्रेषु च सहक्रियात्मक दृष्ट्यवसराणां रूपरेखां सज्जीकरिष्यन्ति। वेव्स इति शिखर सम्मेलनस्य प्रथमं संस्करणं मई मासस्य 1 दिनाङ्कतः 4 दिनाङ्कं यावत् मुम्बय्याम् आयोजयिष्यते। केन्द्रीय युव प्रकरण खेल मन्त्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया उक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनं 47-अधिक-2000 वर्षं यावत् भारतं विकसित राष्ट्ररूपेण निर्मातुं संकल्पानुरूपं रणनीतिक नीतीनाम् उपक्रमाणां च माध्यमेन युवकानां सशक्तीकरणाय प्रतिबद्धमस्ति। ह्यः सायंकाले कश्मीर विश्वविद्यालये विकसित भारत युव संकल्पोपक्रमान्तर्गतम् एकस्मिन् कार्यक्रमे डॉक्टर मंडाविया भारतस्य भविष्यं निर्मातुं युवकानां महत्वपूर्ण भूमिकायै बलं प्रदत्तवान्। असौ प्रोक्तवान् यत् युवच्छात्राणां शक्तिः, महत्वाकांक्षा, नवाचारः च भारतस्य विकासयात्राम् अग्रे वर्धिष्यन्ति। डॉक्टर मंडाविया अवदत् यत् विकसित भारतस्य स्वप्नः देशस्य युवकानां दृढसंकल्पेन प्रतिभया च सम्पूरयिष्यते। प्रसारभारत्याः पीबी शब्दसेवाभिः मासेऽस्मिन् 1 वर्षः सम्पूरितः। इयं सेवा एकस्मै वर्षाय इतोपि समेधिता। प्रसारभारत्या समुद्घोषितं यत् शब्द इत्येतस्य निःशुल्कसेवाः 26-2000 वर्षं यावत् यथावस्थमेव प्रचलिष्यन्ति। अशेषे हि देशे श्वः वर्णानाम् उत्सवः होलिका पर्व इत्यतीव हर्षोल्लासेन आचरिष्यते। इदं पर्व केवलं वर्णेषु मिष्टान्नेष्वेव नैव विरमते, अपितु देशस्य विविध राज्येषु विभिन्न नामभिः विलक्षण परम्पराभिश्च अस्याचरणं विधीयते। अस्मिन् पर्वणि क्वचित् जनाः दण्डप्रहारेण अस्याचरणं कुर्वन्ति, क्वचिच्च जनाः लोकगीतगायनपूर्वकम् एतं पर्व आमन्यन्ते। उत्तरप्रदेशस्य नन्दग्रामात् जनाः भगवतः श्रीकृष्णस्य गोपालकानां च वेषं धृत्वा होलिकाचरणाय बरसाना ग्रामं प्रति गच्छन्ति। उत्तरप्रदेशस्य व्रजक्षेत्रे, वाराणसी क्षेत्रे च होलिकोत्सवः समारब्धः। ऋतुविभागेन पूर्वानुमानितं यत् अद्य असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति। विभागेन उक्तं यत् अद्य दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चण्डीगढ़, उपहिमालयी, पश्चिम वंग, सिक्किमेषु गर्जनेन सह प्रचण्ड वायुः प्रवहति इति आशास्यते। विमेन्स प्रीमियर लीग क्रीडायाम् अद्य सायंकाले मुम्बई नगरस्य ब्रेबोर्न क्रीडाङ्गणे मुम्बई इंडियंस दलं गुजरात जायंट्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। सायंकाले 7:30 स्पर्धा आरप्स्यते। निर्णायक स्पर्धायै डेल्ही कैपिटल्स दलेन पूर्वमेव स्वस्थानं सुरक्षितम्। इति वार्ताः।